हाँ भाई क्या हाल है भैया, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजीस्वाग एंड आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag which helps us keep doing this what we do or not much going on otherwise except a lot of heartburn, hence the 7 up. Not really in the best mental state for a lot of reasons. I hope things get better. दुआ कीजिएगा। खैर चलता रहता है ज़िंदगी में। चलते हैं आज की ईमेल्स की तरफ। माय एनर्जी माइट बी ऊपर नीचे, सो बेयर विद मी। ऑलराइट, द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, Schengen visa issues on a Pakistani passport. Assalamu alaikum Junaid bhai, hope this email finds you well. It doesn't. The information mentioned in brackets are for your eyes only. My name is ABC and I live in a big city in Pakistan. I've listened to every single one of your podcasts. I listen to them while gaming or doing my work in the office. I will get straight to the point. Both my mother and father for the past 2 years have been trying to get a Schengen visa. My father, after a long struggle, was able to get a business visa after directly contacting the embassy via email. Since my mother is a housewife, that's a different story. My mother has a friend in one of the European embassies who assured us that she would be able to get the visa. However, the visa was still rejected. Both my mother and father have a rich travel history and have gotten multiple Schengen visas in the past. Our house is in a posh locality in the big city, also in the name of my mother, and she has ample amount of money in the banks as well. So according to the Schengen visa requirements, everything was okay, but in order. Even her interview went well, and we were assured by the interviewer that we will not face any issues. The visa was still rejected. The reason we were given for refusal was that the embassy did not accept tourism as a reason for travel to the said country. This was honestly a bullshit reason according to me. Now my mother wears a burqa and is a devout Muslim. Now I don't know if it's a racism or because we have a Pakistani passport or the ever so decreasing economical situation of Pakistan. For the past 2 years, I have noticed that even though we are meeting all the requirements and have ample reasons to come back, our visas are still getting rejected, and the reasons are always BS. Can you kindly talk about this issue in your podcast? Apologies for the long email. Best of luck. सो ये भाई हैं, इनके पेरेंट्स हैं, पैसे वाले हैं, अच्छी बड़े शहर में रहते हैं, अच्छा घर है, ट्रैवल हिस्ट्री भी रिच है, बट इनके मदर का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। आई डोंट नो उसका क्या रीज़न हो सकता है। अब आपने जिस मुल्क का लिखा, क्लियरली दे आर नॉट वेरी मच फैन ऑफ द बुरकास। अब बट आई एम नॉट रियली 100% श्योर कि दैट वुड बी द रीज़न पीपल आर स्टिल गोइंग टू दैट कंट्री वेयरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लोथिंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मदर ने कहीं ओवर स्टे किया हो वीज़ा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिल्कुल जो आपकी वीज़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वीज़ा इशू है 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक और आप 12 तारीख को ही वापस आ रहे हैं, बट फॉर सम रीज़न फ़्लाइट डिले हुआ या कुछ भी हुआ और वो 12 से 13 हो गया, राइट, कुछ घंटों की वजह से, तो वो वीज़ा वायलेशन में आता है एंड दैट वायलेशन गोज़ अ लॉन्ग वे। इधर दैट या फिर आपने सही सेटिस्फाई नहीं किया होगा जवाब में। इनको इससे एक चीज़ चाहिए होती है कि यू हैव इनफ टाइज इन द कंट्री दैट यू हैव नो रीज़न टू माइग्रेट। और अब आपने ये भी नहीं लिखा कि पेरेंट्स की एज क्या है। कहीं ऐसा हो नहीं कि देर लाइक क्वाइट ओल्ड। अब उसमें बट देन नो आई एम सॉरी, ओल्ड वाला इसमें नहीं आता। आई रियली डोंट नो कि इशू क्या है इसमें। परहैप्स यू शुड आस्क एनी एक्सपर्ट कंसल्टेंट, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं आफ्टर सीइंग द डॉक्यूमेंट्स। मेरी नज़र में इफ़ यू हैव इनफ रीजंस, इनफ टाइज बैक इन द कंट्री, तो वीज़ा मिल जाता है। परहैप्स ट्राई विद अदर एम्बेसीज। हर एम्बेसी का अलग है। कुछ एम्बेसीज का रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का रिफ्यूज़ल रेट कम होता है, कुछ का रिस्पॉन्स रेट बहुत जल्दी होता है, कुछ का रिस्पॉन्स रेट महीनों लग जाते हैं। सो अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। आई एम नॉट श्योर कि बुरका इज़ द रीज़न या फिर ये कि कभी आपने ओवर स्टे किया है, आपके पेरेंट्स ने कभी ओवर स्टे किया है कहीं, या कहीं टाइम पे नहीं आए, या फिर समथिंग और दी अदर। आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट द इशू इज़। ये आपको कोई ना कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर कि उनका क्या रीज़न है। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन सेज इन कंटिन्यूएशन टू द प्राइस ऑफ इंटेग्रिटी अनदर स्टोरी। आई थिंक ये शायद हमने पहले भी लिया है। Lucky. Dear Junaid, hope your week is going well. This is ABC from France. I'm a PhD doctor living in France for the past 4 years. First of all, I would like to appreciate the great work you've been doing to fill the void for a very long time. We really need woke and sane people in our country to speak the truth out loud and clear. I pay a huge price for that. Perhaps one should look into my inbox. So I was watching your video you posted yesterday, and the price of integrity made me share a little story of mine as well.
We used to have a little Pakistani PhD students community here in the city I live. I was always kind and friendly with all of them and known to be a good host. It used to be very normal to have little tea or dinner gatherings and spend time in each other's apartment every now and then, as we all used to live in the same residential area. One of the guys used to visit us often from another city, and we had done several meetups with him as well. Like all other Pakistanis, I was also friends with him. Once he offered to go for a little walk around the residence after Maghrib, which was a normal summer ritual, and later after the walk, he asked if I could make him a cup of green tea. I said yes, and we came to my place. We had tea and a normal conversation about research, TV shows, etc. After an hour or so, the conversation started to get awkward when he started mentioning some weird shows he likes and vulgar stand-up comedy that he watches. I tried ignoring that and to avoid the awkwardness and let him sense that he must go. I got up and started doing the dishes. He hopped to another subject, yet setting the ground to say that it's a fine night and we should make a moment. I thought he was joking and just trying to see how cool I am about it. Apparently, he got the wrong idea about my open-mindedness. When he asked again that he wanted to kiss me and make a moment, I clearly said no and told him that this is not how it works in real life. It's not a movie. He insisted and I was persistent that it's not going to happen and he cannot even touch me without my consent, let alone kissing me. He kept on insisting to give my consent and I kept on saying no, which made him angry and he tried to use force. He locked my wrist and in his hands, wow, ye PhD scholars hai hamare. I'm talking about the guy, of course. In his hands, kept on getting closer until I was pushed to the wall, put my phone away so that I wouldn't call anyone and kept on insisting. He was scared yet very persistent. I was in a situation where one wrong decision would have cost a lot. If I would have agreed to one kiss, he would have returned with more demand the next day. If I would have used force, slapped him or done anything at that moment, it could have become even worse. I was very scared. This insisting continued for more than 2 hours. Wow. But some magical power from Allah kept me safe from evil and he surrendered and left. After this incident, he kept on asking for forgiveness and said he was guilty, but I don't know if he actually was, as he kept on blaming Shaitan for his own shitty act and threatened to come up again to my door if I won't forgive him. To avoid creating any scene, I forgave him and blocked him. A few months later, I found out he was already in nikah with another woman while he was trying to get closer to me. He did not just hurt me, but also cheated on another woman in his wedlock. He used to be a nice guy whom you could trust. He was halal conscious, prayed 5 times, and nobody could expect he would do such a thing to any girl. The fact that you know that he was 5 waqt ka namazi, that means that he would often show that off. And a lot of people use virtue signaling to come across as, oh, I'm very pious person. Do you know how often do I pray? Nahi na. So yeah, because I don't want to influence that. Khair, it's a personal matter. Okay, kahan the hum? He used to be a nice guy. You could trust. He was halal conscious. One could not expect what he would do. Why he would do such a thing to any girl, especially a Pakistani fellow. It's a shame. He didn't even respect my hijab. A little detail, I'm an average looking girl. I do modest dressing with hijab and I don't remember saying or doing anything which could have given him a wrong clue. I'll tell you what gave him a wrong clue. The fact that you walked around with him and you agreed to make him a green tea in your own apartment. Because hamare yahan, we don't engage a lot with opposite sex, so people don't know how to read a situation or how to understand where things are going. वो बस ये समझते कि अच्छा जब यहाँ तक है तो फिर ये भी करती होगी. You get what I'm saying? सिगरेट पीती है लड़की तो फिर ये सेक्स भी करती होगी खुला डुल्ला. सीधा एक्सट्रीम पे जाता ना, बिकॉज वी आर एक्सट्रीमिस्ट. तो आपने क्लू नहीं दिया. यू आर जस्ट बीइंग काइंड एंड कर्टियस लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स आर, बट बिकॉज पाकिस्तानी men are not trained to take a hint or not trained to know how to learn how to take a no. Hence he did what he did. It took me a while to recover from that shock because I never expected a fellow Pakistani would do such a thing. Well, it has nothing to do with fellow Pakistani. I mean, trusting Pakistani men is already difficult and such incidents make women's lives even worse. I was told that I must not invite anyone alone to my place. But the point is, alone in a place is not an issue, an evil mind is.
In these 4 years abroad, every time I got scared of men, it was never any drunk man or a looter, but a Muslim man with an evil intent. This email must be very long to read, but I appreciate that you took the time out. I wish you the best. Stay safe. I hope you stay safe as well, Dr. Saiba. But like as I said, it's a very alarming situation. हमारे यहाँ men are not trained how to deal with women, and it goes back to the fact that there's extremely less amount of interaction और दिमाग में फरसूदा है और घटियापन है basically. I'm extremely sorry that you had to go through all this, and of course it's not easy to recover from such a thing. It sounded very scary, and the fact that it lasted 2 hours, यानी वो अगला 2 घंटे ट्राई करता रहा, यानी उसको पहला नो, दूसरा नो, तीसरा नो समझ नहीं आया, and he was physically assaulting you. इस पे तो you should have filed a case. पुलिस बुला लेनी चाहिए थी आपने इसके ऊपर. The fact that you let him go, इस तरह के लोगों की और हिम्मत बढ़ती है कि हाँ ये क्या बोलेगी, ये थोड़ी बोलेगी. एंड इट्स नॉट द फैक्ट कि पाकिस्तान थोड़ी है कि कल कोई बोले कि 4 गवाह लेकर आए. वहाँ तो सुनी जाती है औरतों की. कानून सबके लिए बराबर है. यू शुड हैव रिपोर्टेड हिम एंड थ्रोन हिम इन जेल. और क्योंकि अब देखें जिसके साथ उसकी शादी हुई हुई है उसकी ज़िंदगी कितनी अजी रन करता होगा ये आदमी. और ये हमारे PhDs हैं भाई. सोचें फिर जो नहीं पढ़े लिखे हैं, ना ख्वानदा हैं, उनका क्या ही हाल होगा. सो हमारे यहाँ लाइक एस ऑलवेज से कि हमारे यहाँ तालीम कुछ नहीं बिगाड़ पाती. हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम इतना बुरा है, चाहे वो दीनी हो या चाहे वो दुनियावी हो, वो एक अच्छा इंसान बनाने के काबिल नहीं होता. क्योंकि वो नहीं बनाता हमें अच्छा इंसान, वरना हमारे मुल्क के आज ये हालात ना होते. लोगों में डर, किसी भी किस्म की ना शेम है, ना किसी भी किस्म का डर है, किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी से वो बिल्कुल अपने आप को ऊपर समझते हैं. और चोर रास्ते सीखे हुए कि भाई गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग लेंगे ऑन सर्टन नाइट्स तो वो भी माफ़ियाँ हो जाएंगी. वॉशिंग मशीन बनाया हुआ अल्लाह मियाँ को, और इसीलिए ये फैलती रहती है क्योंकि हमने चोर रास्ते दिए हुए हैं. खैर, आई होप आई विश यू सेफ. अपना ख्याल रखें. थैंक यू. ऑलराइट, अनदर क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम अ PhD इन स्विट्जरलैंड. Salam, please answer my question. Hope you're doing great. It's midnight and I'm having a cup of coffee somewhere in Europe, listening to your show, which is very interesting. I'm doing PhD in deep learning AI from Zurich, Switzerland, best university in the world. So far, I'm doing great with my life. Ups and downs are a part of a life. So as PhD is a roller coaster. I have a very deep question in my mind for a long time and I'm trying to search the answers in my mind. I believe you also had come across questions of thoughts sometimes when I see life that when we get almost all the major desires done that people think of, then there is a depression phase. I'm not sure if you also had gone through the same situation, but I feel like hollowness deep inside, and I used to ask myself that what is the real purpose of life. And this question is very deep. Sometimes I feel like even though I have good life, but there is something missing, and why I'm here, what is the purpose of life, and so on. I really struggle with this question a lot. I am sure that you also had similar situation in life. How did you deal with that, or did you get any answer? I would like to know your perspective on that. Sometimes if you see that when we achieve the long-term goals and there is no further desire, then what next? I have some long-term goals, but I already seen that whenever we achieve anything big, it has some dopamine effect in the mind, and we feel happy, and then within a few hours we are at the same level, and we say to ourselves that we invested our 10 years for this moment and it just finished in few hours. However, it feels so great when you are a researcher and somehow contributing to the community that might be a drop in the ocean, but this feeling is great. It could be a bigger purpose of life. What are your thoughts around it? Thank you so much. So basically, ये साहब PhD कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ups and downs होते हैं, dopamine, और sometimes when you achieve something. Well, there's this quote that the worst thing about not getting what you want is actually getting it. Because that's why it said the hunt is sweeter than the kill. It was Lacan's theory. In order to understand life, desires must have its object perpetually absent.
because it's not the it that you want, it's the fantasy of it, which is why they say it's the hunt is sweeter than the kill, or be careful what you wish for. Not because you'll get it, but because you'll be doomed once you get it. तो ये तो है, which is why it's important in life to get to have different goals. Long term goals का यही issue होता है कि you spend so much time and like वो एक build up बहुत लंबा होता है, and then it's an orgasm, and then it's like it's downhill from there, which is why it's necessary to have short term goals. छोटे छोटे goals होते हैं, वो आपको in tune रखते हैं in order to go on the next step. Part जब आप एक ही लॉन्ग वाले पे फोकस करते हैं तो फिर वो उसका फिर डाउनिंग इफेक्ट भी उतना ही थे, क्योंकि जितना ऊपर होता है फिर उतना ही रोलर कोस्टर नीचे भी आता है. सो दैट्स द थिंग. रही बात फीलिंग ऑफ हॉलोनेस की, तो इट्स वेरी कॉमन. आई रिसेंटली मेट जस्ट yesterday someone I knew for a while, and I met him. He's become a CEO at 45 of a very very big organization. और वो यही कह रहे थे कि ये सब तो हो गया, but then like I also feel very empty. And it's not just him. A lot of my friends who have crossed 45 and who have been CEOs, उन सब का यही है, क्योंकि चैलेंज ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी में. अब CEO ही बन गए ना, उसके बाद क्या ही बनेंगे. तो ये होता है. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू यू नो हैव कोई ना कोई सोशल गोल भी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ के try to engage yourself in some sort of social work. उससे होता है कि it gives you meaning. For example, if you start volunteering at a soup kitchen, या फिर कोई old age home है, कोई हॉस्पिटल है, मेक अ विश फाउंडेशन, समथिंग इस तरह के कॉजेज़ में हिस्सा लें, तो वो आपको बहुत मीनिंग देते हैं. एंड लाइक and you also feel very very blessed when you see people struggling for basic things in life, चाहे वो उनकी कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी हो या मेंटल डिसेबिलिटी हो, फिर वो आपको एक ग्रैटिट्यूड की तरफ भी लेके जाती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंगेज योर सेल्फ इन सच एक्टिविटीज़. कोई ना कोई गोल रखें, एंड लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव बैक टू द सोसाइटी. योर रिसर्चेस आर आई एम श्योर हेल्पिंग द वर्ल्ड, बट वो इंटैंजिबल है बिकॉज यू कांट मेजर इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रिसर्च से फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो यू माइट नॉट सी दोज पीपल जिनको वो फ़ायदा हो रहा है, बट यू नो कि हाँ किसी को कहीं ना कहीं हो रहा है. सो एक तो ये है कि समवेयर आउट इन द यूनिवर्स समबडी इज़ बेनिफिटिंग फ्रॉम योर स्टडीज़, और एक ये होता है कि ओके आई डिड दिस फॉर दिस पर्सन एंड नाउ दिस पर्सन इज़ ऑन दिस लेवल. तो दैट्स मेजरेबल. सो मेजरेबल गोल्स, मेजरेबल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आर अ वेरी ग्रेट स्टिमुलेटर, और वो डोपामीन जो है उसका लेवल ही अलग होता है. सो आई वुड अप्रिशिएट कह रहा हूँ, I would actually encourage you to, be a part of such organizations that are working in the betterment of people in one way or the other. चाहे वो medicinal हो, mental disability हो, या कुछ भी हो, कोई sports हो किसी के लिए, but just try to be there with people in real time and help others in need. That will give you a lot of meaning and purpose. And of course, रिलीजियस साइड की तरफ हम जाएँ तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो हमें फैलेसी है हमारे लिए. एंड लाइक द रियल गोल इज़ टू सबमिट योर सेल्फ टू द गॉड. और वो सबमिशन सिर्फ सजदों से ही नहीं, बट कि अल्लाह की मखलूक के लिए काम आना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है. सो दैट आई एम श्योर विल गिव यू अ लॉट ऑफ मीनिंग, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई डू इन माई पर्सनल लाइफ इन ऑर्डर टू फील यूज़फुल. इसलिए मैं अपने आप को इस तरह के कॉजेज़ में इंगेज रखता हूँ. सो दैट बिकॉज हैप्पीनेस इज़ नॉट, एक हैप्पीनेस होती है दैट यू अचीव समथिंग, दैट यू बाय योर फेवरेट कार. वो डोपामीन तो 2 दिन में उतर जाता है, राइट. बट देन एक हैप्पीनेस होती है जो कि बाउंस बैक कहीं और से होके आ रही होती है. सो फॉर एग्जाम्पल, यू डिड समथिंग फॉर दैट पर्सन बिकेम हैप्पी, एंड यू वो आपको रिफ्लेक्ट होके वापस जब आती है. तो दैट happiness is beyond imagination. So try to be on that side of the equation rather than just acquiring things or doing things or achieving goals and then feeling hollow later on. I hope you find your purpose very soon. और अपना ख्याल रखें. थैंक यू. आप लोगों को लग रहा होगा आज ईमेल्स भगा रहा हूँ मैं, बट आई एम ट्राई टू कीप इट कंसाइज ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स
हो जाए. I realize कुछ emails 30 minute पे चले थे. खैर, this one is pretty long, so bear with me. It says, brothers marriage and sisters divorce simultaneously. Dear Junaid bhai, I hope this email finds you in good health and high spirits. I wanted to reach out to you as my elder brother to seek your valuable guidance and perspective on a pressing family matter. Before I delve into the issue at hand, let me provide you with some context about our family. I am ABC 28, working as a software engineer in the Middle East. We are 6 siblings, each of us pursuing our own paths in life. Eldest sister, masters in history, married. Eldest brother, civil engineer, married. Myself, software engineer, engaged. Sister, graphic designer, single. Sister, graphic designer, single. And youngest brother, studying, single. We originate from Gujarat, Pakistan, but we moved to Islamabad when I was 2 years old. We come from a typical middle class background. Our father, now retired, worked as a driver for an oil company. He's a remarkable, kind hearted, and humble person who made tremendous sacrifices to ensure that all 6 of us receive an education and opportunities to succeed in life. MashaAllah. Our family has always been a close knit, and we're the only ones residing in Islamabad. The rest of our relatives still live in a village of Gujarat. Our upbringing and education were predominantly in the capital, but we regularly visited our relatives in Gujarat, especially during Eid and school vacations. Our father emphasized the importance of maintaining strong connection with our extended family, and we cherish these bonds. Now, to get to the heart of the matter, 7 years ago, our eldest sister was engaged to a cousin, a match made for family reasons rather than compatibility. Our father's dedication to his siblings and their wishes led to this decision, even though our sister wasn't entirely happy with it. She used to have stress attacks for several years after getting married. That's so sad. She's a master's degree holder, an introvert, I would say, pretty emotionally sensitive with a strong sense of responsibility. She took care of her siblings before marriage, helped mom in chores, tutored her siblings, and used to take care of all kinds of stuff. Hope you understand her personality. Her husband, the same age as her sister, had limited education, only metric. अब एक मास्टर्स इन हिस्ट्री को पकड़ा दिया एक मैट्रिक पास लड़के के साथ. Heard rumors about history of premarital relationships and works as a rickshaw driver around. I mean, imagine. Even as a cousin, not much open with any of us. He shared the regressive beliefs as his father that a wife's role is limited to serving her husband and in-laws, with no consideration for her feelings, nor needs or love, and most importantly, बीवी को खींच के रखो from day one mindset. That's so sad. After her marriage, she moved to the village, and what followed were 7 challenging years of adapting to a rural lifestyle with an uncooperative husband, in-laws with a rigid traditional mindset and sense of being an outsider in that environment who tried to gel with them at any cost for any possible compromise. In these 7 years, they were blessed with 2 children. My sister faced emotional and moral isolation and even did her deliveries in the absence of her husband. She even had to rely on other cousins to take herself and her children to the doctor when her husband failed to do so by giving excuses of work and stuff when in need. She used to walk her daughters to school despite the long distance, as her husband told her to manage this or not send their daughter to school. मतलब खुद रिक्शा चलाते और वो बच्चे पैदल जा रहे हैं स्कूल. That's so sad. Every couple of months there were issues in their house which could lead to calling upon my parents for setups for their daughter's behavior from her in-laws. They used to mention that my sister doesn't take care of the house properly, kids, husband, and Saas is taking care of everything, but the truth was they never gave her the respect, authority of being the lady of the house in any way. My sister, being the eldest among us, took care of the household with my mother before marriage. So there's no question about her skills to make up a family. It was her in-laws' habit of doing this to the women in their family, as all of us have been witnessing them with their other bahus from years. They all moved out with their husbands in separate homes from joint family. To make matters worse, 10 months ago, she had discovered her husband was having an extramarital affair, which her in-laws were aware of. After confronting her husband about this, she said, मैं जिसके पास जाऊं तुम्हें क्या मतलब? Frustrated and feeling trapped, my sister stopped performing household chores as a weak protest
as someone who's been exploited in many years and not been heard a single time. After a month of this protest, they called upon my parents to sit again as their daughters left performing chores and not taking care of the house, which in their eyes was a much bigger issue than their son being a zani and all that shit outside. Her parents, with the best intentions, tried to mediate between her and her in-laws. However, they were met with accusations and blamed directly at my sister. At this point, after being pushed to the wall, my sister decided to move out of her in-laws' home and back to her parents' place. Here, my elder brother and I assured her of full support on whatever decision she wants to take for herself and her children. Now she has been with us since then with her kids. From the last couple of months, her in-laws apologized directly and indirectly to my father, but no one is putting anything solid on the table on how her life will be improved now in the same place she tried for 7 years, or what is the future of her kids over there. Just apologizing doesn't fix it, because she knows this cycle will repeat again and we will be fixing this wrong marriage for another 20 years. However, my parents, who are elderly, are now urging us to forgive her in-laws and consider reconciling, fearing the loss of family ties and the social stigma associated with breaking a marriage, as they have 2 more daughters to get married. I am getting married in 2 months and they are anxious about whether their siblings will attend and what others will think. My brother, sister and I are determined to support our sister's decision in ending this marriage during our visit to Pakistan in November and securing custody of her children. I feel a deep sense of guilt for not being able to prevent her marriage from taking place in an unsuitable environment. I'm reaching out to you, Junaid Bhai, for your wise counsel and insights. Please help us and provide some direction on how to navigate this challenging situation and address the repercussions it may have on our family. I apologize for the length of this email, but I wanted to ensure you have all the necessary information. Thank you for your time. Alright, that's so sad. So, ये एक भाई हैं, ये यूएई में होते हैं, 6 बहन भाई हैं, एक बड़ी बहन है, मास्टर्स इन हिस्ट्री, और उनकी शादी हो गई कज़न से जो कि रिक्शा ड्राइवर है, मैट्रिक पास, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दिस एंड दैट, और टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस टू द पॉइंट के बाकी सारी बहुएं घर छोड़ चुकी हैं, 2 बच्चे हैं, एंड या सो आई वुड सजेस्ट कि जब 7 साल आपने एक चीज़ देख ली है, सो आगे की भी 70 ऐसे ही होने. सो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी रिकन्सिलिएशन, बिकॉज फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट, बच्चों के स्टैंड पॉइंट से सोचें, और आपकी बहन हैज़ ऑलरेडी सफ़र्ड अ लॉट. मुझे ये समझ नहीं आती, एक तरफ लाइक यू मैंशन योर फादर बीइंग however great he was, but like मुझे समझ नहीं आता कि इतने great fathers जो हैं, how and why do they succumb and they sell their daughters so cheaply. मुझे ये समझ नहीं आता. like एंड्रू शूल्स कहता ना कि like South Asian parents don't give a fuck about their daughters, और ये बिल्कुल उसी तरह का ही है. I have no clue why parents do it to their own child just for the sake of family है, लोग क्या कहेंगे, सोशल स्टिग्मा है, ये है वो है. भाई सोशल स्टिग्मा ये ज़्यादा नहीं है कि घर में लड़ाइयाँ होती हैं और घर का माहौल ख़राब है. अब वही ना, औरत पिटती रहे तो वो सही होता है, बस औरत का घर ना टूटे. मैंने पिछले दिनों एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग वीडियो देखी थी. आई वांटेड टू मेक अ वीडियो अबाउट इट, बट इट वाज एक्सट्रीमली वायलेंट. एक घर था, उसमें या वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग वीडियो थी, एंड इट यू नो इट टुक मी टू अ वेरी बैड प्लेस. वो ये था कि एक घर था जिसमें शौहर जो है वो मिडल ईस्ट में था, और पीछे बीवी और बच्चे थे, और ससुर जो है वो अपनी बहू को लातों और मुक्कों से मार रहा था, और वो छोटे छोटे बच्चे वो अपनी माँ को बचा रहे थे, और वो दादाजी कह के वो रोकना चाह रहे थे, और कोई वीडियो बना रहा था घर से, और ही वॉज ब्रूटली बीटिंग द शिट आउट ऑफ हर. और it was very very triggering, और I wanted to make a video about it and call out on the हमारा जो लीगल सिस्टम है, कि मतलब एक इंसान की कोई कदर नहीं है यहाँ पे, बस वैल्यूज़ हमारी ऊपर रहे. वैल्यूज़ पता नहीं कौन सी ये वैल्यूज़ हैं जहाँ पे औरत इस तरह पिट रही है बच्चों के सामने. वो बच्चे ज़िंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज हो गए, ज़िंदगी भर के लिए, बिकॉज आई हैव सीन दोज किड्स वेरी क्लोज इन माई लाइफ एज वेल हु हैव सीन वायलेंस एट होम, डोमेस्टिक वायलेंस. और फिर क्या जी, उसी औरत की वीडियो आगे लगी हुई थी कि नहीं वो मुझसे गलती हो गई थी. अच्छा, वो मार क्यों रहे थे कि उसने खाना टाइम पे नहीं पकाया था. तो इनकी इस भूखी कौम की, नंगी कौम की जो है ना, रोटियाँ नहीं ख़त्म होती. तो
मार मार के उसको अधमुआ किया। फिर बाद में वो खुद बता रही थी वीडियो में कि वो घर का मामला था और मेरी गलती थी। वो क्या ज़ाहिर उसकी क्या औकात है औरत की इस मुल्क में, तो वो क्या ही कर लेती। उसको पता है मैं अपने घर जाऊंगी, वो मेरे भाई भाई जो है ना, जो बहन के घर का पानी नहीं पीते, बहन का हिस्सा खा लेते हैं, तो वहाँ भी मैं वेलकम नहीं हूँ। और यहाँ से जा छोड़ भी दूंगी तो मेरी क्या ही औकात होगी। मैट्रिक इंटर किया होगा, कहीं काम करने जाऊंगी तो भेड़िए बैठे होंगे हर जगह, हाथ लगाने, हाथ फेरने के लिए, नज़रों से रेप करने के लिए। कोई झूठ बोलते हैं इस मुल्क में औरत की इज्जत है, औरत का मकाम है और औरतें सेफ हैं। घंटा सेफ है इस मुल्क में औरतें। थर्ड क्लास कल्चर है हमारा, एम ही इस पे चौड़े होते हैं जी। जॉइंट फैमिली सिस्टम है और ईस्टर्न वैल्यूज़, घंटे की वैल्यूज़ है। मैं तो इतनी गालियाँ देने का दिल कर रहा है बट मैं नहीं दे रहा, क्योंकि आई डोंट नो आप लोग गाड़ी में बैठ के फैमिली के साथ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। वो उस वीडियो ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था। आई वॉज रियली रियली एंग्री। सो या यही है। अब योर सिस्टर शुडंट पुट अप विद दिस शिट। पहले ही नहीं करनी चाहिए थी, तो पता नहीं यार ये क्यों पेरेंट्स करते हैं अपनी औलाद के साथ। सो आई वुड सजेस्ट, इफ़ आई वर इन योर प्लेस आई वुड स्टैंड अप फॉर माई सिस्टर। भाड़ में जाए सोशल स्टिग्मा, बहन जिंदा और मेंटली हेल्दी होनी चाहिए। सोशल स्टिग्मा, फुप्पो के ताने और रिश्तेदारों की बातें गई भाड़ में, उनसे कुछ नहीं होता। जीते जी आप दोज़ख में झोंक नहीं सकते अपनी बहन को, जो पहले ही 7 साल का टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है। तो शी इज़ नॉट हैप्पी, बात ख़त्म। एंड शी इज़ नॉट हैप्पी फॉर द राइट रीजंस। कोई इनकी कोई अनड्यू डिमांड्स नहीं है। क्लियरली शी इज़ बीइंग मिसलेड एंड बीइंग यूज्ड। एक यार मास्टर्स इन हिस्ट्री कितने ही होते हैं हमारे मुल्क में, वो भी लड़कियों में, उसको घर की नौकरानी बनाया हुआ है। थर्ड क्लास सिस्टम है यार यहाँ पे। आई विश, क्या बोलूँ मैं यार, फिर बहुत ही थर्ड क्लास सिस्टम है। तो ना करें भाई, और उनको इस मेस से निकालें। बच्चे सब पल जाएंगे। इनके ताने चलते रहने दें। बहन जिंदा और खुश रहनी चाहिए। सो इफ़ आई वर एट योर प्लेस आई वुड स्टैंड अप फॉर सिस्टर। और ये छोड़े कि जी अगली आगे बहनों की शादी है और हमारी शादी है, भाई सबका अपना अपना है। और अगर अगले इतने ही तंग नज़र हैं कि वो आपकी बहन की डिवोर्स की वजह से फिर आपको और आपकी बहनों को जज करेंगे, तो बेहतर है वहाँ से भी पुल आउट ही कर लें। जहालत में जाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाले होंगे, समझदार पढ़े लिखे होंगे, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को, वरना फिर एक जहालत से निकल के दूसरे में जाने वाली बात है। सो डोंट वरी, अल्लाह पे ईमान रखें। दुनिया भरी पड़ी है और कुछ नहीं जा रहा। एक तो ये ना कि पता नहीं फिर क्या, मुझे समझ नहीं आता। इतना मजहबी मुल्क है, अल्लाह पे तवक्कल नाम की चीज़ ही नहीं इस मुल्क में। थर्ड क्लास डिसीजन लेते हैं ज़िंदगी के हर मामले में, चाहे वो बिज़नेस हो, कारोबार हो, शादी हो, बच्चे की पढ़ाई हो, कोई तवक्कल ही नहीं अल्लाह पे, बिल्कुल तवक्कल नहीं। तभी बड़ा गर्क है इस मुल्क का, कोई ईमान नहीं अल्लाह पे, सब झूठ बोलते हैं, अब माथे काले करके घूमते हैं। वरना इस तरह की हरकतें करें कभी, इस तरह के डिसीजन लें अपनी औलाद के लिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। तवक्कल ही नहीं है, बस जो पहला रिश्ता है पकड़ा दो जी, पता नहीं आगे क्या हो, ये होगा, बातें होंगी, ये होगा। इन बातों ने ना मुल्क यहाँ से कहाँ ले आए। लाइक आई ऑलवेज से, दिस मास्टर्स इन हिस्ट्री कुड हैव added so much value to this country. She could have been a great professor at a school, college, university. कितने अच्छे दिमाग इनके हाथ से निकलते हैं। अब उनका खुद का दिमाग जो टॉर्चर में 7 साल में रिग्रेस कर गया है, गांव में रह के, वो क्या ही नशोनुमा करेगी अपनी औलाद की। आई होप शी डज, मगर यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो हम जो है ना, एक तो वैसे इस मुल्क में तालीम हासिल करते नहीं हैं और औरतें बिल्कुल भी नहीं करती, बहुत कम रेशो है। फिर जो करती है उनका हम ये हाल करते हैं। घंटा तरक्की करेगा मुल्क। एंड देन यू कंपेयर योरसेल्फ टू द कंट्रीज़ जहाँ पे औरतों के राइट्स हैं, इक्वल कानून उनके साथ होता है, उनकी ज़िंदगी को समझा जाता है, उनकी बॉडी को एजेंसी दी जाती है। हमारे यहाँ क्या, वो बच्चा पैदा करने की मशीन है और पहले दिन से तुन के रखो। थर्ड क्लास कल्चर है हमारा। अच्छा है, हम जिस हाल में हैं, वी डिज़र्व टू बी लाइक दिस। आज की दुनिया के साथ चलने के हम काबिल ही नहीं, और इसीलिए हम आइसोलेट भी हो गए हैं। और अच्छा है, वो एक लतीफ़ा है ना कि एक वक्त आएगा पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का राज होगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की हुकूमत होगी, क्योंकि बाकी दुनिया तरक्की करके मार्स पे चली गई होगी। तो वही हाल होना है हमारा। ये आज भी अगर हम 2022-23 में इन वैल्यूज़, ग्रेट वैल्यूज़ के साथ जिंदा हैं, तो भाई हल्ली वल्ली। खैर, टेक अ स्टैंड फॉर योर सिस्टर भाई, और अपनी और बहनों की शादी की फ़िक्र छोड़ो, अल्लाह कर देगा अच्छी जगह।
मगर जो पहले जिसको बचा सकते हो बचा लो, वरना फिर यू नो हाउ थिंग्स एंड अप इन पाकिस्तान, राइट? और फिर होगा कुछ भी नहीं, पुलिस आएगी बोलेगी जी घर का मामला था, कुछ नहीं होता, 16 सफाई हो जाएगी। कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ी चीज़ कर दी, आपके वाले साहब ने जाके चलो जी वो बहन का ही लड़का है मेरा, माफ़ कर देंगे। एक तो हमारे यहाँ स्टेट के ही नहीं है, बॉल्स ही नहीं है, स्टेट ही नहीं खड़ी होती किसी के साथ। कहते जी घर का मामला आप बता दें, स्टेट पूछती है अच्छा आपका मामला परसू करें नहीं करें, अच्छा चले हम जा रहे हैं। स्टेट ऐसी खसी स्टेट नहीं होती भाई, स्टेट डंडा दे के रखती है कि भाई तुमने सोशल डिसऑर्डर ख़राब किया है इस सोसाइटी का, कत्ल करके या डोमेस्टिक वायलेंस करके तुमने जिंदगियां ख़राब की हैं, निकलो इधर से, तुम काबिल ही नहीं उस दुनिया में रहे। हम क्या जी जी घर का मामला है, स्टेट जाके अपना स्टेट बैंक लेके बैठ जाती है और बस गोल्फ खेलती है और कोई काम ही नहीं है। तभी यही हाल है, बेकार है। खैर भाई, ख्याल रखें अपना, थैंक यू। और जी नेक्स्ट वन सेज लेटर ऑफ अप्रिसिएशन ऑन हाउ व्हाट यू डू फॉर द पाकिस्तानी यूथ। होप दिस ईमेल, हाय जुनेद, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज ABC, 20 years old, living in a big city in Karachi. I'm an undergraduate student studying psychology. I apologize in advance for the long email, but I've been contemplating writing it to you. I wanted to take a moment to express my sincere appreciation for all the work you do for the Pakistani youth. Your dedication and commitment to empowering the younger generation are truly inspiring. Your efforts have not gone unnoticed, and I'm grateful for the positive impact you are making in our community. Thank you for your tireless work and for being a role model for the youth. For example, running the sports and education channel, just to name a few examples. I myself have been listening to your Q&A series for the past 2 years and your main channel videos for the past 3 years. One thing that I really appreciate about you is that you say the truth no matter what. Reality always hurts, but I do sincerely believe that as a nation we need to know what the real truth is regardless of the outcome. बेटा आउटकम जो है ना, कभी कभी बाइट्स इन दी एस। अभी लॉयर को आई पेड 1.1 million इन फी इन अ लीगल केस। ये ट्रुथ बोलना जो है ना इतना महंगा पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ। कितनी बार कितने डिफरेंट मामलात में जाना पड़ता है कोर्ट में। तो वो इसलिए होता है कि आप इफ़ यू टेक अ स्टैंड फॉर समवन और इफ़ यू स्पोकन वे टू मच ट्रुथ, तो यहाँ बैठे होते हैं भाई आपको टीका लगाने के लिए। अभी अभी फीस भरी, अभी आया था वकालतनामा साइन करवाने लॉयर। पार्ट ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ कम्स विद ग्रेट हेट, येस ऑफ कोर्स। आई एडमायर दैट यू स्टिल कंटिन्यू टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन विदाउट गिविंग अ सिंगल थॉट टू ऑल द बैड एंड नेगेटिव अटेंशन दैट यू गेट। आई डोंट गिव अ शिट मैन, मैं लोगों के अप्रूवल के लिए नहीं जीता भाई, मैं ट्रुथ के लिए जीता हूँ। और ट्रुथ ऑलवेज हर्ट्स एज यू सेड, एंड इट्स ओके। माई जॉब इज़ टू do the right thing and say the right things. If it's triggering you, that's your problem, not mine. Your Q&A series has been a breath of fresh air in the space of Pakistani YouTube content. What you talk about and say in these videos is sometimes really eye-opening and downright factual, which leads me to rethink some of my personal life choices. Your videos have helped me to reshape and recreate a lot of my thoughts and feelings about several different topics of discussion in my life in a very positive way. Your views on our society, culture, and relationship management with your close ones are really helpful to me, especially when you talk about why certain people need to be left out or why certain types of people in your life are just red flags. Alhamdulillah, I've decided to take ownership of my outcomes and decisions rather than blaming or ridiculing others, which is what we Pakistanis are constantly doing, unfortunately. I remember in an episode of your Q&A series where you said, sacrifice now for the future or party now to regret it all later in your adult life. Hence, I've already completed 2 internships in different industries, one in the HR and the second in media as a content researcher and video editor. As a student of psychology, one of my main goals is to provide or do something for men in terms of opening up to therapy or to your loved ones. I know that success in life does not come easy. To take part in that is the motto that I'm trying to follow every day, be it academically or related to my physical and mental health. You are the only Pakistani content creator that I enjoy, and quite frankly, I do quote a lot of your videos or sentences to my friends whenever we touch upon a serious subject. I'm also very lucky to have a good close relatives, cousins, and close-knit set of friends on whom I can rely. I'm also trying to be as close as I can to my family in my own conventional way, and alhamdulillah, they are very supportive. I also
like to write you a second email regarding some of the topics of discussion. But first, this email is to just appreciate you and your dedication. I thought that since I'm trying to change a lot of the ways that I live my life, I should credit you too, as your views and opinions have inspired me and allowed me to grow as a person and as a man. In the end, keep doing what you're doing for the youth and the people of Pakistan. We need a lot of guidance and support from people like you. I would like to sincerely thank you from the bottom of my heart. Thank you so much, man. It's very, very endearing to read such emails and such messages after a plethora of hate. But it's okay. I don't let it get to my head. Again, हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होता है, अपने एक्सपोजर और लैक देयर ऑफ से बात कर रहा होता है. आई डोंट ब्लेम देम आइदर. आई रियली विश दे कम टू अ कंक्लूजन, कम टू द राइट साइड. ना भी हैं तो दैट्स देयर प्रॉब्लम, नॉट माइन. मैं तो बस बता ही सकता हूँ. एंड आई एम जस्ट सिंसियरली ट्राइंग टू डू माई पार्ट. बाकी इट्स अप टू द पीपल इफ दे वांना चेंज, इफ दे थिंक, if they subscribe to my thoughts and they think that is the right thing to do, or if they have any other own ideas, they're most welcome. So yeah, that is the whole point of this series as well, just to hear people out, because growing up I didn't have enough people to rely on, and I truly understand the significance of having someone you can with whom you can share your own thoughts without having the fear of being judged or misjudged. तो कोशिश यही होती है just to, and sometimes people have answers on their own, they just want to hear it in my voice, I guess. वो एक reassurance हो जाती है. So yeah, it's sort of a therapy. Therapy really, really helps. I was there today myself. So yeah, it was a good one. So I'm really happy to see that I was able to bring out a positive change in your life. In fact, a few days ago, I read this Q&A thing on my Instagram, if I have made any change in your life, and there were some very nice messages. मुझे अंदाज़ा नहीं था that I have been able to touch so many hearts across borders, and that too very impactfully and significantly. So it's a very big responsibility, and I take it as a responsibility. I can't be very loose with my thoughts. I can't be very naive or very casual. क्योंकि people are very malleable, खासतौर पे youngsters. They're very there's this word, impressionable. So I try to create the right impressions, and I hope this works out. And thank you so much for your email once again. It was very nice to read this. Thank you. Alright, the next one says, inspiring video that helped me achieve my dream. Dear sir, I hope this message finds you in good health and high spirits. I wanted to reach out to you and share a story with you that has been years in the making. A story that your video from 6 years ago played a significant role in shaping my life. It's a tale of determination, faith, and ultimately success. Around half a decade ago, I stumbled upon your video titled How to Study in Germany for Free, where you interviewed young individuals studying in Germany. Little did I know that then that this video would ignite a spark in me, leading to the incredible journey I'm about to describe. Your video made me realize how fortunate those who study abroad are, while I was here in Pakistan, grappling with the challenges of building my own startup. The dream of studying abroad seemed distant, but I decided to take a leap of faith and explore my possibilities. Initially, I considered studying in Italy due to lower costs, but a friend suggested Germany might offer better opportunities. So I began my quest for information, scouting YouTube for guidance and joining online communities dedicated to studying in Germany. I even consulted an advisor who demanded a fee that couldn't guarantee a visa. Despite the initial setback of rejections based on my grades, I persevered. I didn't give up. I took the IELTS exam even when some advised me to retake it. I focused on completing my degree and handled various administrative tasks required for the application process. A turning point came when a teacher at my college agreed to sponsor me. With that support, I applied to numerous universities, hoping for a positive response. To my surprise, I received admission
from just one university, but I remained undeterred. The unexpected interview appointment that followed was a nerve wracking experience, but it went remarkably smoothly. And today, Alhamdulillah, I am thrilled to announce that I have received my visa for the winter semester of 2023 at Julius Maximilian's University of Würzburg, where I will be pursuing a master's degree in informatics. The opportunity is a dream come true, and I owe a part of this achievement to you and your inspirational video. I'm writing to request a favor from you. Your videos have the power to inspire and motivate countless individuals like me. Would it be possible for you to create a video based on my story? You can keep my identity anonymous, but sharing this journey may encourage others who are facing similar challenges in pursuing their dreams of studying abroad. Once again, I want to express my deepest gratitude for the inspiration you provided through your video. May you continue to inspire and guide many more individuals on their journey towards their dreams. Thank you for taking the time to read my message and look forward to response or consideration. So, मैंने एक वीडियो बनाई थी. So I was in Germany for the very first time. This was, I guess, 2017 या 2018 summer. और म्यूनिख में था. आई रैंडमली रन इनटू दीज टू किड्स. दिस इज़ फॉर दोज जिनको नहीं पता है कौन सी वीडियो है. तो मैंने उनसे नेचुरली एज आई एम ऑलवेज क्यूरियस, मैंने उनसे पूछा आप यहाँ कैसे आए. सो दे स्टार्ट टेलिंग मी एंड देन आई वाज लाइक ओके, आई थिंक दिस शुड बी ऑन कैमरा सो दैट मोर पीपल कैन यूटिलाइज. सो मैंने उनसे परमिशन ली. दे एग्रीड टू इट. हमने वो वीडियो बनाई. I still remember where it was called. It was outside this church at Marienplatz, which is in Munich. और वो वीडियो मैंने डाल दी. और वो उस वीडियो के बाद खैर उन दोनों का लोगों ने जीना हराम कर दिया. इवन दो उन्होंने पूरी वीडियो में बताया कि भाई ये ग्रुप है, यहाँ पे ये करना है, ये करना है, उसको फॉलो करना है. इवन देन एंड टू दिस डे वो आज भी मेरे पास एडेड हैं दोनों लड़के. उनको आज भी मैसेजेस आते हैं कि यार हमारी हेल्प कर दें. उन्होंने कहा भाई उस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है. खैर देर उस वीडियो से दो मतलब एक पर्सपेक्टिव सामने ये आया कि एक जो लोग खुद से काम करना चाहते हैं ना. सो देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु एंडेड अप इन जर्मनी एंड नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान बट आल्सो फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश. और मुझे हर कुछ महीनों बाद किसी न किसी का इसी तरह का मैसेज आता है कि आपकी वो वाली वीडियो देख के मैं आया, या वो वाली वीडियो देख के मैं आया था और अब ग्रेजुएट हो गया और अब जॉब कर रहा हूँ. और फिर हाँ, सो दो टाइप के लोग. एक तो वो जिन्होंने वो वीडियो देखी, इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, पहुँच गए. एक वो होते हैं जो आज तक पूछ रहे हैं कि जी वो अहमद भाई जो उसमें थे उनकी आईडी बताते हैं या उनका लिंक्डइन बताते हैं, और वो आज तक ढूंढ रहे हैं. पता नहीं उन्होंने उनसे ऐसी क्या बात करनी है जो उन्होंने ऑलरेडी उस वीडियो में नहीं की. सिमिलरली अभी जब मैं मिलान में था इस समर, अगेन आई मेट 3 वंडरफुल स्टूडेंट्स फ्रॉम हैदराबाद, पाकिस्तान, हैदराबाद. और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई. उन्होंने बोला नॉट ओनली दे वर स्टडिंग फॉर फ्री बट दे वर ऑल्सो गेटिंग अ स्टाइपेंड. तो मैं यार ये बात लोगों को पता होनी चाहिए. तो उसका भी काफ़ी लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया. अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू इटली. इनफैक्ट इस वाले उसमें सेमेस्टर में जा भी रहे हैं. और उनमें से एक ने मुझे अभी मैसेज किया परसों. उसने अपनी वही खोली, कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी क्योंकि इतना माशाल्लाह उसको फीडबैक आया. सो ही डिसाइड टू टेक इट. उसने इसको एंटरप्रेन्योरियल दिमाग इस्तेमाल किया अपना, और उसने यही सोचा होगा कि यार वैसे ही मुझे मेरे पास लिंक्डइन पे या फेसबुक पे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, सो व्हाई नॉट आई मेक अ कंसल्टेंसी आउट ऑफ इट एंड मेक मे बी चार्ज मनी. आई मीन टाइम इज़ मनी एंड इज़ हेल्पिंग पीपल आउट, सो व्हाई नॉट. तो मेरी कोशिश यही होती है. और इसी वीडियो का ही कंटिन्यूशन थी व्हेन आई वाज इन तालीन इन एस्टोनिया आई मेट वंडरफुल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स. उस वीडियो का भी यही मकसद था. वाई? बिकॉज इट्स अ वेरी फनी स्टोरी. जब ये जर्मनी वाली पहली वीडियो बनाई थी, द सेकेंड टाइम व्हेन आई वाज इन म्यूनिख आई अगेन रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल टू मीट एट मरीन्सप्लाट्स अगेन. और उसमें से जो एक साहब मुझे मिले थे हु was living in the outskirts in Balochistan, didn't even have internet but found my video, and then he ended up in Germany, and then he was working to be a sports scientist, and he was working with Formula 1 drivers, Bayern Munich के football players, and even Roger Federer. Imagine. So उस वीडियो का इम्पैक्ट ये था कि एक बंदा एक अननोन इलाके से उठा बलूचिस्तान के, and he ended up working with Roger Federer, गाइडिंग हिम कि उसका फोर हैंड का रेंज ऑफ मोशन कितना होना चाहिए ताकि ही कैन हैव अ लॉन्गर करियर. तो उस वीडियो की बात मुझे
अंदाज़ा हुआ. I was just having fun online. I was just making funny videos and just ranting. But उस वीडियो के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि the power of speech कितनी पावरफुल होती है, एंड यू नेवर नो कि आपकी कौन सी कही हुई बात कहाँ जाके किसको कहाँ इम्पैक्ट करी है, एंड देन उसकी लाइफ किस तरह रीशेप हो रही है. सो आई टेक दिस वर्क very religiously and very responsibly. So yeah, I'm not surprised reading your email. तो 6 साल हो गए और इस तरह के I've gotten like 600-700 messages in the past 6-7 years of students citing that video in Germany. In fact, a very good friend of mine just ended up in Germany. वो उसका भी पहला सेमेस्टर है और I know her since my stand-up days. This was before YouTube. Wonderful lady. एक्सलेंट रीडर, किताबें चाटी में उसने दुनिया की सारी, और मुझे ये लगता था कि शी इज़ बीइंग वेस्टेड. एक देखो, पढ़े लिखे और समझदार इंसान का ना इस मुल्क में कोई काम नहीं है. यहाँ पे ना चोर उचक्के डाकू, और ये उन लोगों का मुल्क है, मतलब उन लोगों के लिए अच्छा मुल्क है ये. काम का आदमी यहाँ ज़ाया होता है अनफॉर्चुनेटली. आप बोलेंगे जी सारे काम के आदमी बाहर चलेंगे तो इसका क्या होगा, तो वही होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, और फिर बाद में शायद दोबारा नई मखलूक निकलेगी और वही कुछ बनाएगी इसको. अभी तो बहुत मुश्किल है इसको सही करना. तो उसको फिर मैं पुश करता रहता था कि यू नीड टू लुक आउटवर्ड्स, थिंक अबाउट योर चाइल्ड, दिस दैट ब्ला 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 ब्ला. खैर आसान नहीं था, बट शी इज़ लेफ्ट हर चाइल्ड बिहाइंड विद द फादर in hopes के she'll go there, study, work and eventually have them over. और मैं उसको यही बोलता था, तुम्हारा बच्चा ना जब इंशाल्लाह उसके बाद लाल कलर की किताब आ जाएगी ना, और जब वो अभी ही माशाल्लाह व्हाट 5-6, मेरा जब वो 18-20 का होगा ना, झोलियाँ उठा उठा के दुआएं देगा कि मेरी माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी और सही काम किया था. तो माशाल्लाह आई एम सो हैप्पी टू सी दैट शी इज़ देयर. और उसने भी वही वीडियो देखी हुई थी ऑफ कोर्स, एंड वी बीन इन टच थ्रू आउट. तो मैं बताते ही रहता था उसको, एंड आई विश आई कुड हैव शेयर्ड हर वॉइस नोट विद यू. उसने मुझे यही बोला कि लाइक द थिंग्स, सो हर ट्रैवलिंग एक्सपोजर वॉज लिमिटेड टू मिडल ईस्ट, बट दिस इज़ हर फर्स्ट यूरोपियन ट्रिप. तो उसने मुझे यही बोला कि यार लाइक द थिंग्स यू से इन योर वीडियोज़ वर एब्सोल्युटली ट्रू. आई एम रियली इंजॉइंग, आई एम मूविंग अराउंड फ्रीली, कोई नहीं घूर रहा, कोई तंग नहीं कर रहा. एंड लाइक मैं हमेशा बार बार यही बोलता हूँ, ख़ास तौर पे फॉर वीमेन, कि यू हैवंट एक्सपीरियंस्ड ट्रू फ्रीडम ऑफ मूविंग अराउंड एंड नॉट बीइंग जज कि क्या पहना हुआ है, या कोई देख रहा है, कोई घूर रहा है. ओ बाय द वे, अब सब माई वाइफ जस्ट लैंडेड दिस मॉर्निंग विद माई सन. शी वॉज टेलिंग मी समथिंग कि जैसी फ़्लाइट लैंड हुई है कराची में, सो दे फ्लू वाया टर्की, राइट. तो एक औरत ने काफ़ी हंगामा किया टूवर्ड्स दिस गाय, एंड शी वॉज़ वेरी बोल्ड, एंड आई एम ग्रेट, आई मीन लाइक आई वॉज वेरी प्राउड टू हेयर अबाउट दिस. उसने उसको जलील किया बंदे को कि वो बंदा पूरी फ़्लाइट में ही वॉज लिकिंग हिज लिप्स, मेकिंग वल्गर जेस्चर्स टूवर्ड्स हर, और वो पूरी फ़्लाइट बर्दाश्त करती रही. शी वॉज जस्ट वेटिंग है पाकिस्तान लैंड हो फिर मैं बताती हूँ. बट वही वाली बात है, हुआ कुछ भी नहीं. उस बंदे के साथ वाले आ गए, वो ये तो मेंटली डिसेबल्ड है, या ये है वो है. तो उसने बोला वाई वॉज ही ट्रैवलिंग दो, और मेंटली डिसेबल्ड है, इसको ये करना आता है कि मतलब हाथ से गंदे इशारे करना है, ज़बान से गंदे इशारे करना. सो या आई डोंट नो, मैंने ये बात मेंशन क्यों की. सो खैर, so her voice note was very refreshing to hear, and she was like, this is such a cool place, and I do miss my child, but I'm like ever more determined to work my ass off and make sure my family ends up here, क्योंकि this is heaven on earth. So yeah, it was really nice to hear her voice note. तो इस तरह की रही बात covering your story. Sure, if I'm ever in Germany and in the parts where you are, maybe yeah. हर बंदे को अच्छा एक और चीज़ बड़ी फ़नी है, हर इंसान को लगता है कि उसकी जो ज़िंदगी है ना, उस पर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए. हर इंसान को ये लगता है. कुछ कुछ की ट्रू भी होती है, कुछ कुछ की बस बड़ी बेसिक सी चीज़ें होती हैं कि वो मैं अपनी औलाद का बड़ा ख्याल करता हूँ, मैं रोज़ काम पे आता हूँ, पूरी दुनिया जाती है यार, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बनेगी. सो या हर बंदे को लगता है उसकी ज़िंदगी एक पॉडकास्ट है.
और हर उस बंदे को या बंदी को जिसको मैंने ऐड कर ली, मतलब एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट फेसबुक पे, अगला उनका हथियार ये होता है कि वो पॉडकास्ट मैंने मेरी लाइफ जर्नी शेयर करने लगी। आपकी जर्नी क्या है? कि जी मैंने इंजीनियरिंग की है, इसमें जर्नी वाला पार्ट का है। सो या हर बंदे को लगता है उसकी पॉडकास्ट होनी चाहिए या उसकी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगलिंग है वगैरह वगैरह। खैर कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ होती है मैं ज़रूर कवर करता हूँ, एंड आई हैव। सो या जैसे द गूगल स्टोरी दैट आई शेयर्ड, बाय द वे आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल हु वर्क इन गूगल एक्चुअली गॉट वेरी जेलस ऑफ दैट वीडियो। वो हम भी तो काम करते हैं, उस लड़की में ऐसा क्या है कि जिसको जुनेद ने उसकी वीडियो बनाई और हमारी बनाई। एंड आई वाज लाइक दीज मदरफकर्स दे वर्क एट गूगल, और इनकी ये छोटी सी सोच है कि हम पे वीडियो क्यों नहीं बनी। डूड यूर कैलिफोर्निया में काम कर रहे हो यार, आगे बढ़ो। जेलस बस वही ना, यू कैन टेक अ पाकिस्तानी आउट ऑफ पाकिस्तान बट यू कैन नॉट टेक पाकिस्तान आउट ऑफ पाकिस्तानी। छोटी सोच के लोग भाई। उसकी देखो, द रीज़न व्हाई आई कवर्ड हर स्टोरी वाज ए, she hailed from a small town and she worked her ass off on her own and ended up in Poland. शफीका की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि आई हैव नोन हर पर्सनली, और उसमें जाहिर है बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं की गई थी, बट लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स which makes her story ever so remarkable, but obviously they can't be made public. तो मेरे लिए ना उसमें एक एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट ये थी कि मैं उसको पर्सनली जानता था और मुझे उसके बिल्कुल अच्छी तरह मैं उसके हालात से वाकिफ़ था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उससे ये बात वादा किया था कि वंस यू एंड अप इन गूगल एनी वेयर इन द वर्ल्ड आई विल कम ओवर देयर एंड मीट यू। और वॉर्सो जाने की वजह यही थी मेरी, बिकॉज व्हेन शी हैड टोल्ड मी शी इज़ देयर आई वाज लाइक आई एम गोना कम सी यू एज प्रॉमिस्ड। सो या प्रॉमिस में मैंने कनाडा का वीज़ा लगवा लिया था, मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है वहाँ रहती है, आई वाज लाइक आई विल कम सी यू। खैर तो वो भी हो जाएगा, बट पॉइंट बीइंग, हाँ, तो दैट वीडियो हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई एम एवर सो ग्रेटफुल। और उसी चीज़ ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि द प्लेटफॉर्म इज़ ह्यूज एंड यू हैव नो आइडिया कि आपकी बात या आपकी आवाज़ कहाँ तक जाती है और किस किस को कैसे कैसे ग्रेटली इम्पैक्ट करती है और हेल्प करती है। और ये नस्ल सुधारने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दिस गाय जिनकी ईमेल है, ही गोज़ देयर, ही इज़ देयर, ends up doing best for himself, raises a great family, they end up doing best for themselves, and it goes on and on and on. That's like helping million people and improving millions of lives in a matter of what, 5 generations. So you have no idea आपकी बात कहाँ तक जाती है। So please, if you have any platform या ना भी हो, never ever underestimate the power of communication, because information flow बहुत तेज़ी से होता है, अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से। सो या ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आते। सो बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड। आई होप you got to learn a lot, and don't forget to subscribe the channel, and you can support this channel on patreon.com/Ganjiswag। और अपना ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़।